Hi, good afternoon. कैसे हैं आप? How you doing? Sorry about the delay. We are going to be doing DNF block and coordination all combined in one power pack session. So, क्या करने वाले हैं? Exemplar and JEE Advanced. Description में there are links to all my other sessions in general, and this is where we are at. Where are we at? Oh, आज तो 11 तारीख हो गई. मतलब this. Look at that. This week we're going to be completing पूरा सिलेबस well, जितना हो सकता है ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड एडवांस दैट्स अ फोकस चलो शुरू करते हैं पहला सवाल एंड बाय द वे yeah as always you have any doubts oh hydrogen iodide hi that's the kind of mood we are in on this fine Monday rec all right hydrogen iodide to you as well good afternoon Yuvraj Akshat everybody here thanks for sticking around and again apologies for being delayed today what do you think the answer to this one is पहला सवाल right off the bat which of the following reactions are disproportionation reactions disproportionation में क्या होता है you've got a medium thing to start off with medium oxidation state and then you get a higher oxidation state and lower oxidation state right all right B easy one Samineni Vijay Kumar absolutely this what Yuvraj I have no idea what you're talking about A B and C okay all right let's see so medium to high and low okay medium क्या है this is +1 let me write on the 2 and 0 ठीक है इधर 7 minus no 7 plus 4 plus okay KNO4 what KMNO4 M yeah lovely typing all right KMNO4 M बीच में खा गए हम लोग 7 plus 4 plus नहीं again 6 plus 4 plus एक मिनट ये दोनों सेम नहीं लग रहा है नहीं ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे this typing is a bit off huh sorry about that I think पहला वाला में 2 minus है only then this makes sense right this becomes 6 plus and then this becomes 7 plus sorry about the typos आज bear कर लो आज I don't have the access to edit it on the fly like I usually do आज मैं ऑफिस में हूँ not at home so yeah I'm just writing down the oxidation states okay this gives you 7 and 2 this one is called proportionation all right अब बताइए सेकंड में 2 माइनस होगा यस एब्सोल्युटली राइट आदित्य साहब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यस यस सानवी यस गुड जॉब सर अब ऑप्शन ए है क्या हुआ ऑल गुड ओके अब ऑप्शन ए है so not A and B not C but A and B okay I agree you all are absolutely right it's both of these guys that are disproportionation because the first one you're going from +1 to 2 and 0 second one you're going from 6 to 7 and 4 so ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा था this works for this and this यहाँ पे हम लोग 7 से दोनों लोअर में जा रहे हैं 6 and 4 and थर्ड वाले में we're going from 7 and 2 to +4 which is the opposite of disproportionation okay so answer should be A and B बढ़िया let's go to the next one ये fascinating question है KMNO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMNO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is what? Hey Yuvraj, hey Shlok, ये Jan attempt में था क्यों था क्योंकि ये directly exemplar में से है that's why. Am I extra shiny today? I feel like this shirt is very shiny. Okay, no, it's the monitor that makes it look weirder. This looks fine. All right, cool. 2 by 5. Okay. All right. Hare Krishna, Rishabh. 2 by 5 says you guys. Okay, how do we get to this? इसको start कैसे करें? MnO4 minus it accepts 5 electrons to become Mn2 plus. ठीक है? This is reduction और यहाँ पे हो रहा है oxidation where sulfide becomes sulfur. We'll have to sort of balance this or how do we get to know कि कितना moles of KMNO4 will be required with 1 mole of sulfide? You can balance it if you like. Another way to do it this, right? Cross multiplication. 1 mole of KMNO4 has 5 electrons. और हमको कितने चाहिए? We just need 2 electrons. 1 mole of sulfide just requires 2 electrons. मतलब कि एक मोल में अगर है 5 तो कितने मोल में होंगे 2. That's what we're doing. It's unitary method is what we're doing. We cross multiply this and we get 2 by 5 mole which is the answer. बिल्कुल सही. N factor 5 for M, 2 for S, exactly Mn. Yes. सर ये तो रटा हुआ है युवराज गुड जॉब एग्जाम्पलर की ही तो चीजें हैं कुछ चीजें डायरेक्टली रटी हो सकती हैं ओके एक और रटी हुई चीज बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड और R I think is R एम्फोटेरिक ऑक्साइड ब्रैकेट में S एम्फोटेरिक कौन से हैं ये भी जेईई मेन में आ चुका है आई रिमेंबर बिकॉज आई थिंक श्लोक वाज देयर ऑन दैट एंड वी ओपनड अप द एनसीईआरटी में लाइक देखो भाई एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये है वी वर नॉट श्योर अबाउट वन थिंग वी लाइक ये वाला तो है बट ये वाला व्हाट अबाउट दिस वन and we opened up NCERT. All right, Piyush says D on this one. Samineni is saying C.
Okay, so D and C. Interesting. CRO के बारे में I'm not so sure. Not sure about CRO. Rec is like A. Aditya is also saying A. MN207, V205 नहीं होंगे. Yes, MN205 नहीं होगा. V205 नहीं होगा श्लोक. Okay. Although I can't open up the NCERT here, I can open it up. I think I can, right? All right. I think I can open up the NCERT actually. It's going to look a little weird, but hey, it's okay. Let's be weird. You're going to see a lot of ads suddenly because it's company वाले चीजों में. Oh no, do I have to sign in? Gosh, I have to sign in, is it? No, don't show this on startup. How do I open it without it? Okay, let's just do Edge, I guess. Edge with a lot of ads. Edge without ads. NCERT, कौन सा है D and F block? आप लोगों को थोड़ा ये दिख रहा है because it's a little zoomed in, but let me do that. Let me just open up NCERT right here, and हम लोग इसको थोड़ा सा move कर सकते हैं to this side. Okay, let's do that, and then थोड़ा सा. Okay, this is rocket science, huh? Whoa. Okay, is that better? That is better. That's awesome. V205 is DF0. Okay, cool. V205. V205 एक जगह आया, अभी दूसरी जगह कहाँ आया? Okay. Even CRO3 and V205 low melting points. Low melting points. ये देखो, V205 is amphoteric. देख लो, V205 amphoteric V205. यही दिखाना चाहता था, यही लाइन. ठीक है, अब यही करने वाले हम लोग. We'll have to sit and open the NCERT if this is how it's going to be, हाँ. ठीक है, तो V205 डेफिनेटली है, बिकॉज लोग से V205 नहीं है एम्फोटेरिक, इसलिए मैं NCERT दिखाना चाहता था. V205 है. अब ऑप्शंस में V205 में D है और ये, बट V204 नहीं है. लेट्स गो बैक टू दैट वन. V204 इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा है. डू यू सी अ V204 ऑन NCERT? आई डोंट सी अ V204. लेस बेसिक V204 बगल में इसके लिखा था. V204 नहीं है. ठीक है, V204 नहीं है, V205 है. CRO भी कहाँ है? CRO नहीं है शायद. CRO, I haven't seen CRO on NCERT, but maybe इतना बढ़िया से मुझे नहीं याद है. Let's open CRO. CRO है? नहीं, CRO this I don't know. और CRO स्पेस करते हैं. CRO is basic. देख लो, CRO is basic. यही कर रहे हैं हम लोग. एक छानेंगे NCERT like this. ठीक है, CRO is basic हो गया, मतलब आंसर शुड बी A. ठीक है, कूल. ऑप्शन A. यस युवराज. V205 एम्फोटेरिक विद बिट एसिडिक साइड. NCERT में है रेक. वो एक पैराग्राफ में सब कुछ था. एग्जैक्टली श्लोक एक पैराग्राफ में सब कुछ था. वही पैराग्राफ को दिखा रहा था. CRO इज बेसिक. एग्जैक्टली ऋषभ. यही हो गया हमारा काम. कैन यू बिलीव दिस? ओपन अप NCERT. एनीवे, या A इज द राइट आंसर दिस वन. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक. बिल्कुल सही. पूरा का पूरा DNF NCERT याद कर लिया है. IIT and Aditya, definitely you're going to belt it then in that case. Gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? ये भी JEE मेन में आया था by the way. ये भी आया था JEE मेन में. हल्का सा मुझे याद आ रहा है. Gadolinium. Gadolinium 64 है. What is the closest noble gas configuration? Closest noble gas क्या है इसकी? Do you guys remember? Option A. Yeah man. You guys already know. 54. I want to say 54 is what? Is it krypton? You know, like Superman or Krypton? Atomic number 54. Xenon. Sorry. Xenon, not Krypton. Krypton was 36, right? Xenon है. Plus 10. अब सब में 10 है, but gadolinium is 4F7. It's just theory. Yeah? Krypton is 36. Absolutely. But yeah, one of those with D1 and lanthanoids, lol, direct, says rec. Perfect. Sir, ये तो आपने periodic में भी करवाया था. Exactly, Yuvraj. Good, you've been attending session, then you're paying. No, Yuvraj, you did not. So I shut it down now. When you hibernate it is when it turns back on. When you shut it down, it does not. I also have a UPS, so I'll just turn off. So it's a desktop, right? It doesn't have a mind of its own, luckily. Battery नहीं है उसमें. Generally, transition elements and their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in metal ions. अच्छा. Which of the following compounds are colored? ये जो पहला statement है ना, थोड़ा distractor है. What is this? Oh, I thought ये क्या है? That was what I wrote. Okay. The first statement is a bit of a distractor. Okay, I'm giving you a hint. मैं कल से फ्री हो जाऊंगा बोर्ड से. गुड ऋषभ. मैथ्स है ना कल? नहीं, मैथ्स तो तुम्हारा हो गया. आज तो उनका मैथ्स है. 10th वालों का मैथ्स है आज.
ओह शिट, सॉरी, आई थॉट मैंने पानी गर्म किया था बट लुक्स लाइक गर्म नहीं किया था. Dude, this is cold. कल फिजिकल है. ओह, फिजिकल एजुकेशन. That's a nice cam subject you guys take. I like it. हाँ, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, पर मैं 2 अप्रैल का फ्री हूँ. अच्छा ठीक है. पीयूष ए में अनपेयर्ड नहीं है. पीयूष से ए में अनपेयर्ड नहीं है, बट K104 कलर्ड तो है. आई मीन इवन इफ ए में कलर्ड अनपेयर्ड नहीं है, कलर्ड तो है भाई. दिस इज डेफिनेटली करेक्ट. Ti4 plus is not colored. Cu2Cl2 is just a polymer of Cu. It's a dimer of CuCl. Okay. अगर और इसके बारे में पढ़ना चाहो तो CuCl forms dimers, trimers, even whatever those things are with 4 mers, right? Polyhedra form करता है at high temperatures जब ये गैस बनता है etc. But these two are off. What about these two? K104 is interesting क्योंकि K104 में obviously it is 7 plus. It has no unpaired electrons. But जो Mn और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसके बीच में फोटोन ट्रांसफर हो जाता है, which is why it is colored. बट यू ऑलरेडी नो दैट इज कलर्ड यार. अगर अपने लाइफ में थोड़ा कभी भी कुछ लैब में किया है और इफ यू इवन ओपन DNF सब जगह लिखा है K104 इज कलर्ड मैन, इज दैट पर्पल कलर्ड थिंग. खैर ये कलर्ड है. व्हाट अबाउट सीरियम 2+? सीरियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन देखो. ओके, इट इज Xe4F2 5D0 एंड दिस इज अगेन एन अनोमली या फिर लेट्स से एन एक्सेप्शन टू द रूल, राइट? होना चाहिए ये. दिस इज सीरियम. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इट बिकम्स दिस, बट इट बिकम्स 4F2. ठीक है, इट्स वन ऑफ दोज वियर्ड थिंग्स. नेचर, राइट? यू गॉट टू सी व्हाट इट डज एंड एक्सेप्ट इट. सो द आंसर इज A and B on this one. Cool. Yes, tetramers. Thank you, Shlok. That's yeah, exactly. B and A दोनों होंगे. यार प्लीज टेल मी यू डोंट हैव एनी डाउट कि A सही है, राइट? Yeah, bro. Obviously, A is pink and purple in color. It doesn't matter. That's what I'm saying. That पहला line is a distractor. मैं बार बार बोला general transition elements. This is a distractor. इसलिए मैं आपको hint दे रहा था ये. ठीक है. Go with your gut. You know K104 is colored. है ना? वो solid crystal होते हैं purple color के. This, yeah, exactly, right. So ये although ये पहला statement दिया हुआ है, distract मत होना इससे. ठीक है. So hey Praveen, what's up? What's up? All right. Hi. A and B are right answer here. Next question. Which of the following lanthanoids show +2 oxidation state besides the characteristic oxidation 3+3 of lanthanoids? So 2 कौन सा दिखाता है? सीरियम तो दिखाता है. सीरियम we have just seen. सीरियम shows, no, we have just seen. CeSO4 हमने देखा. तो A तो सही था ही and B exactly युवराज. या A तो सही था ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. And B because well we've just seen how B is correct. Which of the yeah +2 कौन सा दिखाता है? Let's see. General configuration क्या होता है? So we got cerium, europium, ytterbium and whatever this is. Ho. So 4F1 to 14, 5D0 to 1, 6S2. That's the general configuration. Okay, let's write down the rest of them. Europium looks like it definitely shows +2 because it's 4F7 configuration. Ytterbium also shows this. Now the problem with this question, you think europium too? Yeah, the problem is कि option A is obvious but it's not the answer. At least उसमें तो answer नहीं दिया था, right? They say that this is really unstable. Okay, and it shows +4 and +2. ये आंसर की जो मैंने निकाली है ना, this आंसर की is from exemplar. ठीक है, तो ये मेरी आंसर की नहीं है. So although in the question just before this, let me open that question up. कहाँ गया? इससे just पहले वाला question. Right here I was confidently telling you कि CeSO4 अच्छा नहीं, ये अलग है. This cerium 4+, हाँ sorry, ये cerium 4+ है, not 2+. That doesn't make any sense. What I have to think about this? Cerium ऐसी, whoa bro, hold on. Cerium, dude, cerium cannot be colored. Ce4+ cannot be colored. Let's look at that. Yeah. Also C, yes. ये दोनों तो सही है. ये किया हुआ रखा है. You think europium? Yeah, europium and ytterbium बिल्कुल सही है. I'm going to quickly look up in the interest of being absolutely sure कि cerium SO4 whole twice कैसे colored हो सकता है? That is a 4+ species with a F0. That doesn't make any sense to me. Shoot, cerium sulfate is yellow. What on earth, bro? Okay, this is fun. Jeez, bro. How is it colored? Oh my god. Chemistry, you know. Oh my god. Okay, उसमें भी चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है. There you go. Just like K104 and K2Cr2O7. It's good we check that. जहाँ chemistry है वहाँ है exception. बिल्कुल सही. Let's address that. Okay.
इधर सीरियम तो आंसर नहीं है, बट दैट मैसेज अप आवर लास्ट वाला असेसमेंट. मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने जल्दी में गलत यहाँ पे लिख दिया और आप में से किसी ने कुछ बोला भी नहीं. दिस इज एक्चुअली सीरियम 4+ व्हिच मींस इट्स गोना बी 4F0, बट फिर भी ये कलर होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर. ये जो मैंने पूरी कहानी लिखी थी केएम ऑफ ग्रुप, इट वाज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर एंड दिस इज द सेम रीजन दैट इसमें भी कलर होता है. अब क्या करें यार, होता है तो होता है. जस्ट IOC थिंग्स. एग्जैक्टली धोखा हो गया, मेरे साथ भी धोखा हुआ. मी एंड यू बोथ आदित्य IITN. Yeah, dude. Apologies. Weird. So the answer, according to this, is just transfer, charge transfer. Yeah? Messed up as it is. Brilliant. Khair, let's move on to the next question. Inorganic, bro. Although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanoids, but cerium also shows +4 oxidation state because हम लोग सीरियम को इनसाइड आउट पढ़ने लग रहा है. सर वो +1.74 वाला क्वेश्चन था ना, सीरियम 4+. या श्लोक, एब्सोल्युटली, या आई रिमेंबर दैट वन. AJ हियर, गुड आफ्टरनून. रेक इज C, श्लोक इज C. या वी हैव जस्ट डन दैट. हमने इतना इसको जो है डाइसेक्ट किया, तो यू शुड ऑल बी एब्सोल्युटली श्योर कि F0 F14 वर्क्स. ऑलराइट, दिस वन वर्क्स, बट व्हाट अबाउट दिस? आई मीन लुक, F0 इज द सेम एज नोबल गैस, नो? बिकॉज F0 तभी होगा जब S0 और ये 0 होगा, राइट? नाउ ऑल ऑफ दिस मींस इट वुड बी xenon का कॉन्फ़िगरेशन, नो? C is correct. You still remember that? That's good, AJ here. That's good. You thought of revisiting these chapters although you completed your graduation. AJ here, really? AJ, that's lovely, bro. What are you doing, AJ? I mean, generally in life, if you've done your graduation. That's very interesting. C is correct, but so is B. Okay, be careful about this. B and C, right? Xenon. 54, yeah, exactly. तो दोनों होना चाहिए से, not just this. Okay. I feel a little evil today by making you guys go through these questions, but ठीक है. Let's go to the next one. This one's going to be easy, much easier than the other ones. Let's match the catalysts, okay, with processes. ये मैंने इतना ज़्यादा मग किया था ना, contact process, कि मुझे याद है कि SO2 becomes SO3 in the presence of vanadium pentoxide. I was like, otherwise I would, what is vanadium pentoxide, bro? खैर, this is what I remember. आप लोग बताइए आपको क्या याद है? इनमें से और कुछ याद आ रहा है? मुझे तो ये भी हल्का सा याद है कि finely divided iron should be there in Haber's process. होता है ना, N2 + 3H2 giving ammonia and Fe and molybdenum is a, what you call it, promoter and catalyst होता है Fe. वो सब आपके सिलेबस से निकाल दिया है, बट ये होना चाहिए. ओके, बाकी और कहाँ हो गया? रेस्ट क्या होगा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस V2O5, 5A. ओ, ज़ीगलर नाटा, सबको ये वाला याद है. ज़ीगलर नाटा सबको याद है, ठीक है. 1 is C, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, हाँ, ये भी डायरेक्ट है. वेजिटेबल ऑयल टू घी. 2 is D. ओके, Cu2Cl2 is Sandmeyer reaction. What is Sandmeyer reaction? कोई बता सकता है क्या? 3. ओके, D is 3. What? Oh no, hold on. I didn't read that properly. 3 is B. Yeah, we are agreed on 3 being B, contact process. 4 is E, finely divided iron is Haber's process. I agree. 5A, yes, okay, agreed. ये Sandmeyer क्या चीज होती है भाई? Diazonium वाला. It forms N2 plus. जिसको Sandmeyer बोलते हैं ना. Victor Meyer क्या होता है यार? This is what? Cu2Cl2 in the presence of what? यहाँ पे क्या होता है? Is it ammonia? Liquid ammonia? I don't know. 0 degrees? No, it doesn't make sense. 0 degrees Celsius पे कुछ था ना? What was it here? What was that 0 degrees Celsius? Sandmeyer, Gatterman, Koch reaction and balls. Wow, Yuvraj. बाप रे. Gaming world, hi, हमको बोलो. Victor Meyer for alcohol. While diazonium salts are treated with CO2 forms chlorobenzene. Yes. Nitrogen भाई साहब चले जाते हैं and what you're left with is chlorobenzene. बिल्कुल सही. So you start with benzene. All right. हम लोग कल ही करने वाले हैं हेलो. कल करने वाला ना, हेलो कंपाउंड्स एंड व्हाट्स द अदर वन? Alcohols, ethers. We're going to do all of that. 0 to 5 degrees Celsius. Why 0 to 5 degrees Celsius? किसी को मालूम है? ज्यादा हो गया क्या? 0 to 5 डिग्री क्यों है? कल बात करेंगे इसकी. We'll talk about why is it 0 to 5 degrees Celsius. What's the point? What happens at higher temperatures? खैर, next question. And this one's interesting. Easy but interesting. Identify A to E and also explain the reactions involved. मजा आ गया मुझे भी. What's up, Patil साहब? Hello to you too. Nano 2 plus Nano 2 plus HCl.
which forms nitrogen in situ, 0 to 5 degrees Celsius, diazonium salt, CO2, Cl2, chlorobenzene. Wow, Rek, wow. Decompose at high temperature, diazonium. Wow, Slok. You guys have studied this inside out. I like this. See you, AJ. Lovely to have you here. Thank you, thank you. Very nice of you to do this. It's not benzene, it's aniline. Thank you. Starts with aniline, which means we're not going to do it tomorrow. We're going to do it when we do the amines chapter. It is aniline. Awesome. So, now you have copper carbonate. इसका क्या कलर होता है? Is this also this? Like malachite ore में यही होता है. कुछ लोग एडवांस की तैयारी करें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये. Don't get scared. CaCO3 which terms lime water and something water milky. You did in your board's practical project. Lovely. D is CO2. D is CO2. अगर ये CO2 है तो ये CO हुआ ठीक है. Cool. CU2 terms lime water milky मतलब ये CaCO3 हो गया. That should be doable. Yeah. Okay. That's great, man. AJ, lovely. Thank you so much. You too. Thanks, boss. Bye. You synthesize azo dyes. Wow, beta. That's great. You have a great school if they made you synthesize azo dyes. In my school, we made soap. उस समय soap बनाने का, और that was a messy process. Soap बनाने का saponification. We got to take the soap back home. हमने उसमें परफ्यूम भी डाला था थोड़ा सा. EaCO3. ओके, ठीक है, ये वाला हो गया. इस तरफ भी आ जाओ, इस तरफ भी कर लो. इधर क्या होता है? ये वाला किसी को याद है? Cu और CuS के साथ क्या होता है? याद है किसी को? DNF ब्लॉक कर रहे हैं. हर बार टाइट्रेशन किया. अच्छा, गुड आफ्टरनून पार्थ, गुड टू हैव यू हियर. हीट विद CuS, किसी को याद है ये क्या है? देयर वाज अ सिमिलर रिएक्शन देयर इन metallurgy. That's a hint. It was called self-reduction. You remember this? You remember this? हमारे स्कूल में सॉल्यूशन चोरी होते हैं. Is copper or is it something else? हाँ, बिल्कुल सही. कॉपर बनता है. Awesome. और जब कॉपर बन गया HNO3 साथ, तो you get CuNO3 whole twice. With ammonia, it will form this beautiful complex, amazing complex, which is this, right? And that should be the answer to this one. Cool. Computer, CuNO3 or is it NO3 whole twice? Vijay Kumar, is it CuNO3 or NO3 whole twice? What do you think? Samineni, what do you think? Computer का setup किया आज for the classes. Suggest something, sir. Okay, all right. Tetramine copper 2. Shlok, so if it is copper 2 here, tetramine copper 2 है, तो ये भी 2 प्लो, this will also be copper nitrate 2. Give me an answer to this one, guys. This is important. CuHgPb self reduction. बिल्कुल सही पीयूष, बिल्कुल सही. यार तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE Advanced की पीयूष. You know a lot for a student who study for NEET. Good, good, good. So this is also 2, right? Somebody ऊपर said copper nitrate. Samineni. Are you sure it's 2 or is it 1? थोड़ा जल्दी बताओ. Let's move on. Deep blue colors, one of the confirmatory tests for copper in salt analysis. Badhiya, badhiya, very nice. Okay, all right, all right, all right. Typing complicated, ठीक है. But you agree, right? It's 2. It's okay. Type मत करो. But you agree, right? कि it's 2. ठीक है. Let's move on. These we already deduced. Lovely. Okay. Now we move on to coordination. और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हम लोग coordination की तरफ आ गए हैं. बिकॉज अभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, है ना? हम लोग अभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय Cu2 प्लस आयॉन्स इज मोस्ट स्टेबल? एंड लुक एट दिस. दिस इज अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल क्वेश्चन. जब आप KSP करते हो, यू गेट ऑल ऑफ देम टू बी, यू नो, बेसिकली log of KSP to be in the order of -11, -15, -34. और इसका एग्जैक्टली उल्टा है. जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो इट लुक्स लाइक these guys have very very high K values. ठीक है? तो does that tell you anything about the stability of this? अगर log K value बड़ी हुई, what is delta G? It is negative log of K or times RT. ठीक है, RT भी है. It's not so important. 2.303, not important. What I'm trying to say is कि this is going to be more and more negative. अगर ये value हुई more and more positive. So to me it looks like
Option B should be the most stable. Isn't it wonderful? Strong field ligand, says Praveen. That's a good way of looking at it. That's a good way of looking at it. Strong field ligand. It's a lovely way of looking at it. Should be option B. Exactly. Log key value. Look at that. The answer in the question itself. Thank you, free offer. Thank you. What do you think about this? Greater value of log K, greater will be the stability of complex. Yeah, absolutely. So 27.3, B should be the answer. Okay. A lovely start to this chapter, and I appreciate NCERT for having these questions. और इसी आइडिया पे JEE Advanced पे सवाल आने वाले हैं. Okay. What they will tell you in JEE Advanced काफी likely है कि they will say कि अच्छा यही चीज कॉपर पड़ा है उसमें, और maybe it has some salt of copper, और उसका KSP वैल्यू दी होगी. Then they'll say you will dissolve ammonia, and then you'll say you will get some concentration. अब इसका जो है क्या solubility कितनी बड़ी कम हुई, इसी पे सवाल पूछेंगे आप लोगों से. अगर ionic equilibrium में सवाल आया तो maybe not copper, maybe not this, but common ion effect will be tested, I think, if they have questions on equilibrium. Okay. They could also have combined this with electrochemistry, because सब related ही है. Electrochemistry भी इसी चीज का extension है. E0 value पूछ लेंगे maximum, इसी में से हो जाएगा. ठीक है, next question देखते हैं. The color of the coordination compounds depends on the crystal field splitting. What will be the correct order? Array, wonderful question. Order of absorption of wavelength of light in the visible region for these complexes. It's a wonderful question. वही जो शुरुआत में कुछ strong field ligand या कुछ बोल रहा था, उसी से related है ये वाला भी. श्लोक एंड पीयूष बहुत जल्दी जल्दी बोलते हुए सी. Have you guys seen this? All right, Roland, you're my type 2 bro. That sounded so bad when it came out loud, but you don't get what I mean. Yuvraj, Kiran, Rek, Shlok are all saying C. Samineni is saying C as well. Wavelength inversely proportional to energy. Absolutely right. Absolutely right. Yeah. So, low wavelength, high energy. सबसे ज़्यादा energy किसकी है? Cyanide, right? If it's a strong field ligand, that means it has the highest energy. देखो, तभी तो it forces pairing. Why would it be octahedral complex की बात कर रहे हैं, right? Why would it force pairing? Because delta naught is greater than pairing energy. तभी तो pairing energy कैसे लिखते हैं? Forgot what it's called. Let me just write pairing energy. I don't remember the short form of this. ठीक है? Because delta naught is greater than pairing energy, इसीलिए तो pair करता है ये strong field ligand, some random whatever. Okay? EG, T2G जो भी है. ठीक है? Now, the point I'm trying to make here is, this is how you internalize कि इसकी energy सबसे ज़्यादा होगी, and then ammonia and then water. So energy का order ये हो गया, इसका उल्टा order हो जाएगा lambda का. So पानी का सबसे ज़्यादा, then ammonia and then cyanide, which is the answer, option C. All right, great to see you, Ayush. Welcome to 11th grade. जल्दी आप आ रहे हैं. I hope your science exam was good. I hope your maths exam was good as well, Ayush. Manorma Yadav ji, absolutely C. Spectrochemical series, says Piyush. डॉक्टर साहब आप बहुत यूज करने वाले हैं IR एंड NMR. अगर आप रिसर्च में जाएंगे डॉक्टर साहब, और स्पेशली आप ये सब करेंगे, इफ यू गो इनटू द सीक्वेंसिंग, नॉट सीक्वेंसिंग, यू गो इन सिंथेसिस ऑफ स्टफ, you're going to be dealing with these two things all your life a lot. I have my first student ever. She is doing a postdoc from Stanford. I just got back in touch with her after a month or so, and she's working on some cutting edge stuff. Okay, I'm talking about this because, well, Piyush is trying to be a doctor and she did biology and she's specializing in biology. I'm talking about this because she uses, and get this, cryo TEM images. Okay, TEM itself is really cool. It's a transmission electron microscope, and she's literally freezing proteins और उसको study कर रही है, and she's seeing how they fold and unfold to treat Alzheimer's. And she's been working on the Alzheimer's protein for the last 5 years. She did a PhD on this as well. I don't know why I'm telling you about this, but because Dr. Saab says spectrochemical series, just a small tidbit as to where this is useful. And if you decide to do more of either inorganic or organic chemistry, you need to get familiar with all of these things, okay? ये दो instruments हैं, your life will be completely on all of this. खैर, let's move on to the next question. सब लोग बहुत शांत हो गए when I was talking about कहानी, हाँ? 1 mole of chromium chloride .6H2O is treated with excess of AgNO3. 3 mole AgCl are obtained. ये कहाँ है? What's this guy called? एक बंदा था ना, उसके rules थे. Werner's theory, I want to say. Werner, was it Werner?
वर्नर्स थियरी से कैन वी सॉल्व दिस? अरे श्लोक देखते ही आ गया आप. या Shlok is on D, Praveen is on D, Rek is on DZL. Yeah, Werner, okay. Shlok, Yuvraj, IITian, all right. Yeah, okay. The reason that you have 3 mole of AgCl precipitated is because 3 chloride ions are outside the coordination sphere. Because वो coordination sphere के बाहर हैं, इसीलिए ये आसानी से हो जाता है. ठीक है? So it must be D. Good job. Easy question. Let's go to the next one. Again, wonderful question. I'm amazed with NCERT. Like seriously, I'm not just saying this because whatever. I have no reason to butter them up. But bro, exemplar. Sadar pranam aapko, jisne bhi banaya hai. You're probably not going to watch this video. But if you have ever seen this, bro, I love the questions that you've made, especially in coordination. The CFSE for octahedral COCl6 4- is 18,000 per centimeter. मतलब ये 1 by lambda यानी कि वेव नंबर हो गया. The CFSE for tetrahedral COCl2- will be what? So it is possible for an octahedral complex to become a tetrahedral complex. और ये याद रखना, this is going to be useful या तो आज या तो कल JEE Advanced में. ठीक है? It is possible that this sort of thing happens. श्लोक ने पकड़ लिया, so did everybody else. All right, Piyush, Rek, Yuvraj, all wonderful, bro. Exactly. Tetrahedral energy is 4/9 of octahedral energy. और 1 by lambda क्या है? It's a way of talking about energy itself. अगर 1 by lambda की वैल्यू ज्यादा हुई तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हुई. Why? Because energy is hc by lambda, right? h nu. तो h और c तो कांस्टेंट है. तो अगर 1 by lambda ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है? That's it. It's as simple as that. So delta T is 4/9 lambda naught. Sorry, delta naught. So 8,000 is what you get. कम हो रही एनर्जी. That's one way of looking at it. Another way of looking at it is कि देखो, you can eliminate options. It cannot be same. It cannot be this. Between these two तुक्का मारना पड़ेगा, but तुक्का मत मारना यार. इस केस में थोड़ा पढ़ लो. It's okay. पढ़ लो. Yes. नीट 2018 का सवाल है. अच्छा पीयूष, पर ये तो एग्जाम्पलर का सवाल है. मैं इतना कष्ट नहीं किया कि नीट के सवाल जेई में डालूं. आज तक मैंने अभी तो नहीं किया है. दिस इट. एनसीईआरटी पढ़ो. दैट्स द मॉरल ऑफ स्टोरी पीयूष. द कंपाउंड्स, दीज टू, इनमें कोई आइसोमेरिज्म है क्या? बताइए. कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट नहीं. सल्फेटो, पेंटाअमीन या कोबाल्ट 2 I want to say. Yeah. And pentamine sulfate cobalt 1. What? नहीं, cobalt 3. कंपाउंड ही अलग है. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. कंपाउंड ही अलग है. कोई आइसोमेरिज्म है ही नहीं भाई. कैटायन है सेम, एनायन है अलग. सो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट? देयर इज नो आइसोमेरिज्म. व्हाट एन ऑसम क्वेश्चन दिस इज. मुदित भाई साहब, इट्स गोना बी डी, राइट? नो आइसोमेरिज्म. बिल्कुल सही. लेट मी क्विकली लुक एट द अदर चैट्स. आई मिस्ड अ फ्यू. एक मिनट. कहाँ गया चैट? जीबीडी चैट जीबीडी. There you go. Shlok, everyone saying D. Okay, we're good. Samineni, please check. हाँ, answer is D, not B. ऐसे सवाल अप्रैल में आ जाए. युवराज, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं यार. अप्रैल में, जैन में भी ऐसे ही आए थे. यही आए थे, ऐसे ही सब आए थे. बस ये थे कि आपने उस समय देखे नहीं थे. अब आप देख रहे हैं, आपको आसान लग रहा है. Chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion. Definition. Which of the following is not a chelating agent? Not, बार बार मैंने सर्कल किया है मेरे ऊपर इस तरफ. Not a chelating agent. मार्क्स ही मार्क्स होंगे. हे जाट साहब, प्रणाम. भाग्या, वेलकम. श्लोक, पीयूष, प्रवीण also giving the answer as A. लवली. रेक, ए और सी में से नॉट श्योर.
थायोसल्फेट मोनोडेंटेट, ओके, ये सवाल ठीक है नीट में, नीट के लिए। सुशील, ऐसे ही सवाल जेई में भी आ रहे हैं आजकल। जेई और नीट में कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस आर द 5 क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल एंट्री होते हैं। दैट्स द ओनली रियल डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन लेवल आर द सेम, एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट देखा जाए तो नीट ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 45 क्वेश्चन करने हैं बेचारों को, 50, आप लोगों को सिर्फ 25 करने हैं, ठीक है। सो केमिस्ट्री बोल रहा हूं, मैथ्स आई नो इज डिफरेंट ऑब्वियसली। ऑक्सलेटो डेफिनेटली है यार, इट्स लाइक बोथ ऑफ दी, दिस इज ई एंड इथिलीन डायमीन ऑक्सलेटो, दीज आर फेमस वंस। ये दोनों नहीं है, ये दोनों हैं, मतलब बोथ ऑफ दीज आर कीलेटिंग। देखो नेगेटिव यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाइडेंटेट है। व्हाट इज थायोसल्फेटो? थायोसल्फेट का क्या होता है स्ट्रक्चर? लेट्स ड्रॉ इट, इट्स इंटरेस्टिंग। It has a double bond between sulfur, double bond between oxygen, 2 single bond. This is what gives you a 2- charge. So अभी देखो सीन ये है कि इसमें 2 ऑक्सीजन हैं, but geometrically speaking, the space is physically not enough for it to form a chelate. Chelate का मतलब क्या होता है? It has 2 or more donor atoms, but the second point it should be able to bind to a single metal ion. That does not happen. इसमें there is, these bonds are pretty far apart. कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन है, जो भी है। हियर द सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स एंड दे आर क्राउडेड, ये 2 अलग से भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हैं हाइड्रोजन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल्दो इट हैज 2 quote unquote साइड्स, इट इज नॉट अ कीलेटिंग एजेंट, ठीक है, कूल, ऑलराइट। या एम्बीडेंटेट नहीं है ना, एम्बीडेंटेट मतलब NC- NCN- या फिर NO2 या ONO, this is ambidentate, right? Am I saying that correct, Piyush? Yeah, लैग हो रहा है क्या युवराज? युवराज अगर लैग हो रहा है तो इट्स मे बी बिकॉज यू हैव सम एड ब्लॉकर्स इंस्टॉल्ड। आजकल गूगल भाई साहब बहुत क्रैक डाउन कर रहे हैं एड ब्लॉकर्स पे, तो लाइव सेशन में भी लैग आ जाता है। या बाइडेंटेट, हाँ श्लोक सही बोला, बाइडेंटेट है पर एम्बी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। अब व्हाट इज इज ग्लाइसिनेटो ब्रो? व्हाट इज ग्लाइसिनेटो? देख लो, दिस इज ग्लाइसिनेटो, ओके, दिस इज ऑल्सो कीलेटिंग। मुझे भी नहीं मालूम था until this question, व्हाट इज अर्थ इज ग्लाइसिनेटो है भाई, अब मुझे भी मालूम है, आई नो, आपको मालूम है, आई ऑल्सो गेट इट नाउ, ठीक है, हेंस ए इज द आंसर। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुपैक नाम बताइए इसका जल्दी से। I feel like I've seen something now. Does it say 199 slides? Hold on. Did I get too many slides for today's question, today's session? Bro, 119 seemed like a big number. I think कुछ hidden slides हैं इसमें. Oh, okay. Oh, okay. How much time do we have left? Oh, we have a lot of time. We started late. बहुत time है, आधा घंटा हुआ है। Gly, yes, that's it. That is an amino acid, right? बिल्कुल सही, that's an amino acid. GLY is an amino acid. Piyush, is that an amino acid? Glycine is an amino acid. Glycinato comes from glycine. Good job. Good job. Well done, Shlok. इस वाले का C. Okay, Divya, hello, hello, hello. Rek, युवराज, सब लोग बोल रहे हैं C इसमें. Okay, this one's easy, right? Diamine, 2 अमीन हो गए. एंड प्लैटिनम का क्या है? 1 प्लैटिनम, 1 and 1, so 2 I want to say, so it's platinum 2, right? platinum 2 के हिसाब से we can get these out, yeah, anion की बात कर रहा है ये, because saying platinate, that's not right. this also goes because इसमें 2 लिखा नहीं है. Diamine makes the most sense because what is N-amine? I don't understand what is N-amine. Chloro, nit, अच्छा नहीं, this is nitrito N. Nitrito N तो NO2 ठीक है, that is fine. But इसमें di है ही नहीं. There is no di, which is why C must be the answer. Yeah, di because there are 2 amine atoms over here. 2 NH3 atoms. You write as diamine. Chlorido, nitrito N, platinum 2. All right, C is the right answer. Let's move on. Let's move on to the next one. Atomic number of manganese, Fe, and cobalt are given. Which of them form inner orbital octahedral complexes which are diamagnetic? Diamagnetic मतलब पहली चीज even number of electrons होने चाहिए.
right? That's the first thing. Right? It cannot, even if there is pairing, even if there is pairing, even number हो तभी diamagnetic हुआ, ठीक है? तो let's see, ये जो ions हैं, इसमें पहले what is the primary valency? 3 plus इसका, this is 3 plus इसका 2 plus इसका 3 plus, सही बोला? हाँ, 2, ये ध्यान रखना, okay? This 2 and 3. So 3d7 4s2 3d6 I want to say, no, 3d5 4s2, yeah, ये है 3d6 4s2 एंड ये भी सेम है. तो 2 इसका हटा दो तो ये हो जाएगा, 3 हटा दो तो 3d5 हो जाएगा, इसका हटा दो 2 और 3 तो 4 हो जाएगा, इसका हटा दो 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है? So this is what you get of these ions. Now out of these cancel, क्योंकि ये है odd pair. आंसर बताओ अभी क्या बोल रहे हो? कुछ लोग सी बोल रहे हैं. पीयूष is saying C, Shlok is on C, Aditya is on A, Piyush is C, Yuvraj E, Divya is still on A. Like please check it is C says Shlok. Oh, para. Why are you thinking para, bro? Diamagnetic लिखा है, para क्यों सोच रहा है यार? All right. इसमें से diamagnetic कौन से हैं? Interestingly, okay, let us see. Cyanide, ammonia और cyanide. अरे ये तो इंटरेस्टिंग हो गया, तीनों नहीं होगा डायमैग्नेटिक, देखते हैं. लेट अस सी. ओ, दो चीजें हैं, डायमैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दो चीजें इसमें लिखी है, ठीक है? लेट अस सी. सो दीज टू, जिसमें और इसमें, बिकॉज दे आर द सेम 3d6, दे विल हैव अ सिमिलर बिहेवियर. Whatever it is, the behavior will be similar because of the number of electrons. What is that similar behavior? Pairing हो जाएगी. Pairing होने के बाद ये दोनों हो गए D और फिर S और फिर P3, ठीक है? A भी होगा, है ना? वही तो पक्का A तो होगा ही ना. अगर C है तो A होगा, अगर A नहीं होगा तो C नहीं होगा. 20 लोग ओनली. मयंक नॉट इन द मूड. कर ले भाई, तेरे को इतना टाइम पास करना, आई डोंट केयर. पढ़ने आया तो पढ़ ले, नहीं फिर जो करने दे वो कर. बी में तो मेरी रेक्स से डिबेट हुई थी, ये तो मैं भूल नहीं सकता. युवराज, तो आपके हिसाब से बी सही है कि नहीं है? युवराज, बहस हुई थी तो बी है कि नहीं है भाई? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज हैपनिंग विद बी गाइस? I agree with A and C. What about B? थोड़ा सोच के B के बारे में बताओ. I'll wait. This is interesting, so I don't mind waiting for this one. ये काफी सही है. B is not. B is outer. Are you sure? B is outer. कैसे बोल सकते हो तुम? How can you be sure? What do you think? B is sp3d2. Interesting. Why, dude? Why is it sp3d2? Pairing नहीं करेगा फोर्स. युवराज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इट इज इनर बट नॉट डाया. युवराज की बात सुन लो. युवराज कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लो. नॉट बी सेज दिव्या. दिव्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बी? कैन एनीवन टेल मी बी में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आई एग्री विद दिव्या, नॉट बी, बट व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बी? इट्स ओके मयंक भाई साहब, आप आंसर तो दीजिए. मेक यूज ऑफ दिस ऑसम सेशन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. देखो यहां पे एक अजीब बात है. रिमेंबर, whenever you decide what is happening, you have to compare two things. बार बार मैं ये बोलता हूं, pairing energy versus splitting energy, और ठीक है versus delta 0 और delta t, ठीक है, which is the same as splitting energy. Why does anything happen? Energetically या kinetically favorable चीजें होती हैं. ये दो चीजें every process, chemistry, physics, whatever, kinetically, energetically, ये दो चीजें. अब ये अजीब चीज है भाई. डोंट शूट मी, आई एम जस्ट अ मैसेंजर. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. ओके, इन मैंगनीज दिस इज व्हाट हैपेंस.
ठीक है. One guy decides to get paired and second like bro मैं क्यों हूँ pair? It is easier for me to do D2 sp3 than to pair it up. If I pair it up, I'm like bro अब मैं क्या करूँ? What is D3? That's not going to happen. That's ridiculous. उसके लिए you require a lot of energy to do that. So it's easier to ठीक है ना तेरा ना मेरा. Let's pair one up and let's do D2 and then sp3. It's messed up. I agree, but such is inorganic chemistry. ठीक है, such is inorganic chemistry. It's not diamagnetic. Exactly, Praveen. T2 G5 Eg0. You mean T2 G4? No, Piyush. Explanation is exactly as Piyush said. ठीक है? Cool? Yeah? Yes. Two unpaired, two paired. Exactly. Yuvraj, once bitten, twice shy. Good job, Yuvraj. पढ़ लिया आपने, अच्छी बात है. ठीक है. So commonly, I know in all answers we write it like this, but actually ये क्यों होता है? Because of this pairing is lower than this delta naught, है ना? दो अच्छा श्लोक, हाँ मिस हो गया. Yeah, good job श्लोक. Yeah, absolutely. चलो आगे बढ़ते हैं. Right back at you, Chiru. Hey, Chiru was the name of that awesome character in that show that I really liked. जो अंडमान निकोबार में था. I forgot what it was called. काला पानी. What a beautiful show on Netflix. Answer is A and B. Wonderful question. हाँ मैंने भी मैसेज नहीं देखा आपका युवराज. मुझे भी लगा मैंने मैसेज मिस हो गया बट आया नहीं शायद. An aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to deep blue on addition of excess HCl. But why? क्यों होता है ये? कोई बताएगा? An aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to deep blue on addition of excess HCl. बताइए क्यों? But why? ये मजेदार सवाल है, ठीक है? थोड़ा एफर्ट लगाना इसमें. इसके बाद है 129. I have one more interesting question for you. उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन, एक असर्शन रीजन एंड देन वी डू सम जेईई एडवांस्ड की चीजें. ठीक है, कूल. एक दो चिंदी सवाल हैं, देन वील डू जेईई एडवांस की चीजें. शिवराम राठौड़, हेलो. आंसर बताइए. काला पानी तो जेल है. एग्जैक्टली, इट्स अबाउट दैट. इट्स अबाउट spoiler alert. No spoilers. Watch the show. It's amazing. It's one of the nicest shows on Netflix. Desi Indian show that I've seen. Option B and C. Praveen is saying C. Yuvraj is B and C. Aditya is saying A. Piyush is saying C. Shlok is saying A और C दोनों के ऊपर युवराज. Okay, all right. Okay. Cobalt 2 chloride. Deep blue on addition of excess HCl. ठीक है. Originally क्या था? Cobalt 2 chloride होता क्या है? Okay. होता क्या है पहले? This is cobalt 2 chloride. HCl डालो बन जाता है ये because CFSE of delta T is less than the octahedral field energy. ठीक है? This is the reason why it's colored. Okay, cool. It is B and C. Good job since everybody got it right. ये नहीं आया properly. श्लोक समझा नहीं. बाबली बिल्कुल सही. समझा नहीं. श्लोक गो हेड. सर, डोंट हैव एनीथिंग, सिर्फ YouTube है. क्या बोल रहे हो तो? इज दिस अ पैरेलल कन्वर्सेशन गोइंग ऑन? आई डोंट अंडरस्टैंड. डिड यू गाइस फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट और समथिंग? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन D2G EG. एग्जैक्टली आदित्य. एग्जैक्टली. ओके. B and C आपके A and C दोनों के ऊपर युवराज. ओके. This is just theory, dude. चमका नहीं. श्लोक, I know, right? What's up? I mean, I'd like to give you some reasoning behind it, but it is, it's just that it happens. I mean, what do I do? Like HCl डाला, उसका मर्जी हुआ कोबाल्ट का बदल गया भाई. अब मैं और क्या बोलूं? या पता नहीं था. This theory that you just know, just find out because NCERT में है. It's a little tiring to when you have things like this, but real life, right? It's weird. Khair. Yeah. If you know that this happens, then you can guess that this is happening. If you don't know that, you're very likely to say A. You're going to say A. You're not going to say B and C. You're going to say A if you don't know. But if you know B, you will gravitate towards C as well. Yeah. Okay, anyway, abhi aa gaya. Hopefully, if it comes in an exam, you'll know what to do. Next question.
Identify the optically active compounds from the following. A nice question, isomerism. C होगा तो B भी होगा. Exactly, Yuvraj. Exactly. Yeah. I mean, NCERT sadly, yeah, bro. I mean, yeah. Identify the optically active compounds among these. Okay. Now this one's interesting. One of these two is not interesting and also not optically active. Last guy here looks like, no, I don't think the last. Let's eliminate this. ये तो नहीं होने वाला है ना. Look, what is happening here? I have all of these are nitrogen or amines, right? And let's choose a different color here. This is chlorine. Now, whatever I do with it, it's going to be the same compound. I don't think there's any isomerism possible here. Do you think D में isomerism possible है? आपको क्या लगता है? Maybe. This is something that, am I in the right direction or you're like, no bro, obviously इसमें तो होता है. I feel कि D को eliminate कर सकते हैं. I feel that. What do you think? Yeah, it doesn't make sense for D to be optically active. Whatever you do, it's going to be the same compound. A and C, only A and C, right direction? All right, thanks for the feedback. Babli saying A, Praveen, Rek, Piyush are all on A and C. All right, let's look at them. 1 minute. For this tris बोलते हैं ना, tris ethylene diamine cobalt 3 है ऑप्टिकली एक्टिव. देख लो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. Takes a lot of time to write, doesn't it? Similarly ये वाला है ट्रांस नहीं हुआ यार. यू ड्रॉ मिरर, इट्स सुपर इम्पोजिबल, हेंस ये वाला नहीं है. All right, let's go to the next one. Cis को देखते हैं क्या होता है. Cis is again non-superimposable. Hence, yes, ये वाला होगा optically active. ठीक है, perfect. And hence, this is the answer. चलो, this is very easy and इस टाइप का क्वेश्चन शायद ना आए, but ये वाला definitely आएगा bro. I think this something like this came in JEE main also. Yes, D is not right. D में possible नहीं है. ANC absolute trans में तो POS है, plane of symmetry है, but इसमें नहीं है. Yes, आदित्य, perfect. प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. ओके, ऑलराइट, या एब्सोल्युटली. जैन में था, ये वाला था ना. इसका आंसर बताओ. विटामिन B12, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये वाला मुझे याद है. ब्लड, हीमोग्लोबिन, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है भगवान जाने. विटामिन बी, आई थिंक दिस इज रोडियम, आई थिंक दिस इज कोबाल्ट, we'll have to see. But I think actually बाकी करने की जरूरत भी नहीं है. रुको. We can scam our way through this. Chlorophyll, magnesium, A and 5. This is the answer. Bro, this is what we did. Even in JEE main, I remember. यही हमने किया था कि भाई बाकी करने की जरूरत नहीं है. Chlorophyll, magnesium खत्म. Let's do it and move on. Right? Rhodium होता है Wilkinson, but rhodium क्या होता है किसी को मालूम नहीं होता. ठीक है. Magnesium कुछ लोगों ने सुना भी होता है. Rhodium कहाँ आता है किसी को मालूम ही नहीं है. Periodic table में rhodium कहाँ पे है. You'll be like, no भाई 5D में है. You know this bro, but 99% of people don't. Hence, you get 99 percentile. I can become a good motivational speaker, right? Anyway, time pass aside, A5, B4 पक्का है, बाकी भी हो जाएंगे. So Wilkinson catalyst is rhodium, vitamin B12 is cobalt, I guess. हो गया, ठीक है. हाँ, युवराज आपकी शिफ्ट वाला है. Wilkinson में rhodium होता है. Okay, cool. Good to know, guys. Right, time pass कर रहा है, chill है. Okay, next question. This is also doable. Assertion ये है. ये दिखाता है मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन. ध्यान से करना. साइनेकोबालामीन, आई हैव मक्ड दिस टू, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. अडेक, ADEKR, फैट सॉल्युबल, आई वांट टू से BNCR नहीं, ADEKR वाटर सॉल्युबल, BNCR फैट सॉल्युबल, कुछ तो था यार. भाई ठीक है यार, एवरीडे लाइफ बॉय मॉलिक्यूल्स वही है, सेम डिफरेंस. चैप्टर्स दैट वन डज नॉट स्टडी. आई एम किडिंग. पढ़ाते समय में पढ़ा था पहले, ठीक है. फर्स्ट टाइम आई स्टडी ऑल ऑफ दिस व्हाइल टीचिंग. हे व्हाट्स अप मोनिका, ओम प्रणाम. ओ मैन, ऑल द बेस्ट ओम, ऑल द बेस्ट. आई हियर यू. डी इज द आंसर. प्रवीण, रेक, भाग्या, आदित्य, ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ओके, श्लोक, ओके. Assertion is false, reason is true. Lovely. That sounds so cheap and weird. Strong field ligand 6+ नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके?
3 मतलब अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अनपेयर्ड होगा, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। D2sp सही है बट 1 इलेक्ट्रॉन है। मूव ऑन मूव ऑन। अब शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। JEE Advanced questions, couple of them, just couple of easy ones. Let's do this. Oh shoot, FeCl4 has tetrahedral geometry. Let's see. वही strong field weak field ligand वाला। देखो यार JEE Advanced पे ये होता है कि 4 अलग अलग सवाल 4 अलग ऑप्शन दे देते हैं। अब क्या करें? कोबाल्ट, एथिलीन डायमीन डाइक्लोरिडो प्लस हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हैं क्या इसके 2? Okay. This has a higher spin only magnetic moment than this. Let's see. Cobalt ion in this has sp3d2 hybridization. यार sp3d2 अगर होगा तो ये नहीं हो सकता है। If it is this, then this is wrong. C and D में से एक ही करेक्ट लग रहा है मुझे। What do you think? I just off the top of my head, just by looking at the options, मुझे लग रहा है कि C और D में से एक तो गड़बड़ है। अब वो कौन सा गड़बड़ है वो आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा टू फाइंड आउट, बट आई फील एंड दिस जस्ट अ गट फीलिंग कि सी और डी में एक तो गड़बड़ है। ठीक है, ए देखते हैं, लेट्स एनालाइज ए में क्या हो रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हो? सी पक्का, फिर डी पक्का गलत। अगर प्रवीण और सूर्य बोल रहे हैं सी, सूर्य व्हाट अ नेम ब्रो, ए इज ट्रू, ए एंड सी ट्रू, बी चेक करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सी तो सही है बोल रहे हैं सूर्य, ठीक है भाई, सी सही है, डी नहीं है। FeCl4 has tetrahedral geometry. Now टेट्राहीड्रल में स्प्लिटिंग का उल्टा हो जाता है कहानी। जी नहीं लिखते हैं, वो उन गिराड वाला चीज है, वो सब नहीं होता है। इट इज जस्ट T2 एंड E। ठीक है, E मतलब 2, T2 मतलब 3। ओके कूल। नाउ लेट अस सी कि 3 प्लस आयन में क्या होता है। हाउ डिड आई गेट दिस? इट इज 3d6 4s2, राइट। Fe इज आर्गॉन 3d6 4s2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d5 हो गया। 3d5 कैसे करेंगे? तो 4 चले जाएंगे इधर, नहीं 4 क्यों जाएंगे? इट बी 1 2 3 4 5, है ना, पांचों चले जाएंगे बिकॉज ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। सो जब पांचों आप डाल दोगे, व्हाई? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन डेल्टा नॉट। बार बार मैं ऊपर, सॉरी अबाउट दैट वियर्ड माइक थिंग दैट्स हैपेंड। मेक श्योर दैट यू राइट इट लाइक दिस। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द स्प्लिटिंग एनर्जी, इसलिए स्प्लिट हो जाता है, नहीं तो फिर पेयर हो जाता है ना। जो भी एनर्जी कम है वो होता है। टेट्राहीड्रल है फॉर श्योर, ए इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। बी का देखते हैं। 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, देखते हैं, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। बट जेई मेन कम पूछता है, बट जे एडवांस हमेशा इस पे सवाल पूछता है, तो मर्क दिस प्रॉपर्ली इफ यू आर फोकसिंग ऑन जे एडवांस। एक मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, मिरर इमेज बना सकते हैं क्या? मिरर इमेज बनाते हैं, देखते हैं। लेट्स सी मिरर इमेज। पहले लेट्स स्वैप 2 ऑफ दीज आउट, लेट्स स्वैप देम आउट एंड सी इफ इट्स डिफरेंट। लुक्स लाइक कंप्लीटली अलग है। स्वैप कर दिया, सेम कंपाउंड नहीं निकला। ओके, interesting. Okay, we swapped this out or swapped that out, it's the same. So right now in this case I have swapped this out. Okay, and तीसरा कौन सा हो गया? ये, ठीक है। So looks like you have 3 different isomers and not 2, which is gets a little confusing. बस प्रैक्टिस की बात है ये। B राइट होगा। पीयूष मुझे तो 3 दिख रहे हैं। पीयूष, tetrahedral means sp3, yes युवराज, absolutely, बिल्कुल सही बोला। So A is true, A is true. B में I see 3. Are these 3 weird? Are they wrong? If they are not wrong, then B is wrong. ठीक है, एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, take a minute. ये और ये, these 2 are clearly different, right? What about this? हाँ, ये भी अलग ही है। Yeah, I'm sold on this one. Yeah. इसमें नो पेयरिंग, इसमें होती है पेयरिंग, क्योंकि है यहाँ पे है आपके पास अमीन, सो एंड एथिलीन डायमीन। सो या, दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग। इफ दैट इज राइट देन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हो रही है पेयरिंग। अगर पेयरिंग हो रही है तो इट्स गोना बी, अरे एंड शो नहीं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, डोंट एंड शो। D2sp3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट फोर्सेस पेयरिंग। ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट A and C आर करेक्ट, B and D आर रॉन्ग। EN के साथ पोजीशन देख लो। ऑल राइट, थैंक्स युवराज, थैंक्स युवराज। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, डोंट गेट स्कैर्ड। एसिटाइल ब्रोमाइड ब्रोमिडो डाइकार्बोनिल बिस ट्राई इथाइल फॉस्फीन आयरन 2।
कितने हैं इसमें FeC bonds? Wilkinson was exactly this. बिल्कुल सही श्लोक. Good job, good job. PPH, this what you have spoken of, right? This is used as an organic agent a lot. I don't want to talk about this because ये Claydon में है, textbook में नहीं है. सर ये क्या है? युवराज, this is not that complicated. We'll write it down. अलग एक लिखते हैं ना, दिखते हैं क्या है? एसिटाइल बना लो. एसिटाइल क्या ये है? ब्रोमिडो ये हो गया. कार्बोनिल तो बस सिंपली CO हो गया. एंड एग्जैक्टली एज श्लोक पॉइंट आउट, जैसे PPH होता है, फिनाइल होता है, फिनाइल के बजाय हम लोग इसमें इथाइल डाल रहे हैं. दैट्स ऑल. ट्राइथाइल फॉस्फीन. दिस इज दिस. PH3 इज रेगुलर फॉस्फीन. H को रिप्लेस कर दो इथाइल से, ट्राइथाइल फॉस्फीन होगा. अगर तुम फिनाइल से कर दो तो ये हो जाएगा. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन विल बी दिस. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज अ रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. वी वोंट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ क्योंकि मुझे इतनी ऑर्गेनिक नहीं आती है, ठीक है. बट आई जस्ट नो. ओके, कोऑर्डिनेशन ने डी ब्लॉक में लिखा था. हाँ, बट इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनिक रिएजेंट. एंड Fe2+ है. ट्राई करो. कितने हैं Fe और कार्बन के बॉन्ड्स बताइए. वी आर ऑफ द, अभी 1 घंटा थोड़ा ज्यादा हो गया बट इट्स ओके. 5 और मिनट लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे. लेट्स ट्राई. अरे वाह रे, आंसर दे. वंडरफुल वंडरफुल. What do the rest of you think? क्या लगता है आपको? Oh my God. No. Hey, by the way, 2 dicarbonyl. Okay, dicarbonyl तो है, but acetyl भी तो है. कहाँ गया पेन? ब्रो पेन कहाँ गया? ये भी तो है. दिस इज C ना. मैंने ड्रॉ अजीब से किया है, बट ये है. दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी अ बॉन्ड, FeC बॉन्ड. तो 3 होने चाहिए ना. व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो 3 दिख रहे हैं. आपको कितने दिख रहे हैं अभी? क्या लगता है आपको? Dude, we made a short. Did it come out? We're doing this thing at 5:30. Do you guys know that 5:30 पे we're going to do a launch of the whole JEE जीत की तैयारी. So I'm just checking. Is that short out? We made a shot just before this. They made me do random things in the shot. Okay, so they better have come out after doing all of that. It's not out. I'm going to kill them. इतना भगाया मुझे. खैर, ना it's okay, it's okay. एसिटाइल में C होता है ना. एसिटाइल में या exactly. एसिटाइल सही. Oh, is this? I think I made acetyl, but acetyl is basically C. Yeah, this is acetyl. ठीक है. My bad. Yeah. 3 होना चाहिए पहले के लिए. जीत का तो है लॉल. ओके ओके ओके. बेंजीन पे लगता है वैसे ही Fe पे. ओके ओके ओके. So let's do this. Okay. Bis मतलब there are 2 of these. So I've drawn them first. The most annoying things. कार्बन के साथ ये ब्रोमीन इधर. Couple of carbonyls. I'll just check. Acetyl I think is CH3COO minus. In that case it will change. I think it will become 2, right? Let me just check this one. Let me just check this. पहले ही लिया जीत का तो. Oh, that's great, Yuvraj. Yeah, I think you are the first person, Yuvraj, to get it. So Kartika, who is our awesome head of business, she told me, and I don't want to spoil this for you guys, but I think you are one of the first people to get it because Yuvraj told us that, hey, the Jeet page is live. I'm like, really? Is it live? It was on my day off. I remember it was a Wednesday because I take Wednesdays off. And उस समय मुझे पता चला कि आ गया. And Yuvraj asked me, यार कौन सा कोड लेते हैं हम लोग जीत के लिए? कौन सा कोड? I'm like, bro, I have no idea. So you get 10. Oh, I didn't talk about all that promotion stuff today, did I? How could I? How could I? Yeah, Rek, मुझे भी यही लगा था. That's what I thought as well, right? But what is? Oh, that's acetate. So I was right. I keep second guessing myself because there's too much to mug, right? So सही है. This is good. Acetyl is CH3CO. Thank you. Thank you. Yeah. Awesome. All right. The answer is 3. बिल्कुल सही. I think this is the last question for the day. Last question for the day. And a fairly easy question. हम लोग बाकी जो कर सकते हैं उससे काफी आसान है. Fusion of MnO2 with KOH in presence of O2 produces salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yields another salt X. The manganese containing ions present in W and X respectively are T and Z. What?
Yeah, I think this is Y. This is not T. This is Y. Yeah. Both Y and Z are colored and have tetrahedral shape. Y is diagrammatic. बहुत simple है, bro. Both Y and Z pi bonding occurs between p orbitals of oxygen and d orbital manganese in aqueous acidic solution. Y undergoes disproportional reaction to give Z and MnO2. Yeah, Yuvraj, I remember. Yeah, absolutely. Comment में links. Yeah, Rick. I started late, so I thought let's get to the content directly. We'll talk promotion. हम लोग कर लेंगे यार. Don't worry. रुको, let me tell these guys. भाई कहाँ गई shot? Lalit bhai, Hare Krishna. कहाँ गई shots? Students are asking. I've told them very confident we shot a goofy shot right now. So if you have it, please update it, upload it. मैंने अपने superstar ललित जी को बोल दिया है कि वो help करे. He's like pro at these shots, huh? He's got us like 2-3 shots which have like millions of views, literally millions of views. A, C and D, चलो देखते हैं एक एक करके. Alkaline medium में you get MnO4 2-, that's the main thing, okay. अब ये K है तो ठीक है, K भी डाल देते हैं तो उसका counter ion K होगा. So you have two of these, K2MnO4 basically, and this is a salt W. Oxidize करने के बाद बन जाता है KMnO4. Okay, why oxidize? Because I'm going from 6+ to 7+. Cool. इन दोनों का स्ट्रक्चर NCERT में दिया हुआ है, दोनों टेट्राहीड्रल है. The main difference is this double bond. यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, which means कि इसके वजह से होंगे contribution. दो नेगेटिव, इसका एक नेगेटिव. तो both of these are tetrahedral for sure. So both of these are colored. That is correct and have tetrahedral shape. Colored है कि नहीं मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है कलर है कि नहीं. But tetrahedral तो है. तो let's see. Let's hold it off. Let's देखते हैं. Why is diamagnetic in nature? नहीं तो Y diamagnetic तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि Y कौन सा था? Go back to that. Y कौन सा है? Ions, हाँ. Y is 6+ and this is 7+, right? So उल्टा हो गया. This is उल्टा, right? ये वाला है para, ये वाला है diamagnetic. And yes, there is d pi p pi bonding between p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese. इसीलिए होता है color. Okay, हाँ दोनों color. Aqueous acidic solution, Y undergoes disproportion. Yes, D is correct. D is correct. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है. The main thing is that the MnO orbital from this, and you get yellow is absorbed, purple solution is seen. Do you guys know all of this? ये चीज मालूम है ना कि absorb जो color होता है उसका complementary color दिखता है. Absorb हो रहा है yellow, what color you see is purple. That's that chart, no? Complementary colors का etc. ACD we're not sure. ग्रीन होता है MnO4 2-. चलो श्लोक ने बोला ग्रीन तो होता है ग्रीन. Hence B हो गया करेक्ट because this is green and the other one is purple anyway. उल्टा हो गया. ये हो गया green and ये हो गया purple. All right, good job everybody. Munson, who's Munson, bro? Since I don't have my awesome slides to do the promotion, I'm literally just going to go and open it up. Let's go. Shop.byju's.com. Let's do real-time promotion. This is where you gotta go to get the, whoa, 6,999 only? No, I'm kidding. That's something else. Byju's. I have a feeling कि मैंने goof up कहीं पे कर दिया है. Where is the exam prep? Dude! Oh, best promo ever. Do you remember the code, guys? I think it should be there on the main page. This was amazing. Oh, there you go. Yeah, it's on the main page. I messed up. Right here. Did you guys see it? फिर से जाते हैं. It is right behind me, I want to say. Is it here? No, it's on the other side. It's on the other side. It's that corner. 4,000 bucks it says. But that's a lie. It's not 4,000. Yeah, you got to apply this, okay? Ends in 458. Does not end in 458. मेरे पीछे लिखा है. Apply get 10. And I think you can apply more codes here. Hold on. Let's scam. Let's do these things on the spot. So you apply the code get 10 and you apply this code as well, right? The name of the teacher plus 500. Use any of the teachers. Use Bhumika, Abhishek, जो भी teachers हैं, anybody's name and put 500 after that. You will get this saving and this is what it will cost you. ठीक है? Starting में ही है क्या? Okay, Munson Wheel. Okay, I thought there was a serial killer called some Edward Munson. Anyway, starting में ही है. All right, so this is what you do to get the thing. We're going to come and spam you about this at 5:30 p.m. today as well. They're going to be shorts about this. The main thing is I think this is actually going to help you. Real talk, I think is going to help you. 18th to 22nd is when we're going to do this. If you've been attending our free sessions, that's awesome, that's lovely. The main difference between the free and paid session is you get to chat with us. You get to turn your mic on, do some time pass, ask real questions. If you don't understand, sir, क्या हो रहा है? यहाँ पूछ सकते हो. You have access to the app
till the 31st of May, which is still advanced. Maybe we'll do another something like this closer to the advanced exam as well. But you'll have access to the app till then. Some students are like, yeah, मेरे पास already app है. I don't want to pay for this. I understand, yeah. But this is what the plan these guys have come up with. Yeah. Wow, good to know. Oxbridge, UK, lovely. Thank you for whatever you're saying. I can't read the whole thing. My way of promoting unique. Yeah, bro. अब क्या करें? यही होता है मेरे से. इससे ज़्यादा नहीं होता है चीज़ें. Wait, what is Oxbridge saying? I want to read it. Okay, anyway, I can't read. Welcome to spam at about 5:30 p.m. Absolutely. Chalo, ends at 3150. Yeah, that's the cost, final cost, what 3150. I don't think it's getting lower than that, but using both of these codes, you can get it to 3150, which I understand is a big amount, right? $3,000 for a 1 week course sounds pretty much. But what you're getting out of it is all of us, mainly access to the app till the end, and all of us teaching you for 15 hours in the week. I feel like I've over-promoted this time, huh? Khair, 5:30 पे मिलते हैं. This is the plan for on the JEE and NEET channel till 16th. उसके बाद हम लोग ये वाली चीज करेंगे. And for students who are in the 10th grade, hopefully we will start sessions on that as well very soon after. Thank you so much. You're all awesome too. See you. Bye. मिलते हैं हम लोग 5:30 बजे. टाटा.